Yes, sir. उनको लगता है वो सबसे वर्ल्ड के सबसे नकारे इंसान वही हैं, तो उनको तो आईआईटी में होना चाहिए था, तो फलाना आईआईटी में चला गया, तो फलाना ऑलरेडी एकेडमी में है, तो फलाना ही वो अपने आप को बहुत सेल्फ ब्लेम। और एक तरह से पेरेंट्स का भी इसमें रोल है, वो भी एहसास दिलाते हैं, वो नहीं उनको बार बार बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं गया तो क्या हुआ, तो अगली बार चला जाएगा, यू आर अमेजिंग गाइस। तो सपोर्ट सिस्टम भी मिसिंग है और वो सेल्फ वाला लव भी मिसिंग है। राइट, इफ यू से कि सर आई हैव द हैबिट ऑफ क्लेप्टोमेनिया, आई फील लाइक स्टीलिंग थिंग्स, इट्स नॉट वर्केबल। Right, sir. Or if you say, sir, I sometimes get a desire to kill people and I want to see how people die. Can it be worked upon? No, it can't be worked upon. Yes, What sir. can be worked upon, sir? I'm very less organized. I'm not able to manage my time the way I should. It is workable. Right. And I am not as efficient in my knowledge section as I should be. Right, sir. I need to work upon my, knowledge. स्टूडेंट है मेरा, आप खुद सोचिए कि 22-23 बार एसएसबी के लिए जाना अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रेंथ की बात है। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप अपने आप को रिपीटर कह के कम आंकना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को हमेशा कहिए कि मैं लगा हुआ हूँ और मैं लगा रहूंगा, और तब तक लगा रहूंगा जब तक मुझे भगवान अनुमति देते हैं मेरे एज के हिसाब से, और मैं बनूंगा। तो आप अपने आप को रिपीटर कह के ये मत सोचिए कि मैं बहुत बेकार हूँ, आप बेकार नहीं है, जस्ट दैट यू आर नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ द वे यू शुड हैव, बिल्कुल। क्योंकि एनसीसी एक तरह से एक बहुत मेजर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। राइट सर। परंतु आप इसको ऐसे मत देखिए कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट देगा ही देगा, अब हम इसको बैलेंस आउट भी तो करेंगे ना। आपने एनसीसी अच्छा किया बट आपने एकेडमिक्स की ऐसी तैसी कर रखी। राइट सर। Even a recommended candidate sometimes will get screened out in the next board. राइट सर। So तो many सिस्टम examples. जो है इंडिपेंडेंट है, इट डजंट केयर यूर अ रिपीटर, यूर अ फ्रेशर। तो जनरली जवानों को ये सोचना चाहिए जब वो जवान बने हैं, अच्छी बात है वो अफसर बनना चाह रहे हो, बनेंगे भी, परंतु ये नहीं करना है कि ये बोलना है कि सर मैं तो बन गया था बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या बन गया मैं, परंतु मैं बनना नहीं चाहता था। यहाँ दिक्कत एक हो सकती है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं कि बोलना है, सबको सोचना भी चाहिए कि अगर वो आर्मी की नौकरी कर रहे हैं तो बहुत शान से करें, और वो शान और वो गर्व और बिलोंगिंग सर्विस के लिए, और वो खुशी दिखे उनके चेहरे, ये बहुत जरूरी। Hello friends, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav, and today we have Commandant Rajiv Ranjan sir with us. Sir is a retired defense officer and a personality coach. He's been mentoring students preparing to join defense forces as an officer and able to successfully guide them in their journey. Sir is a qualified interviewing officer from Defense Institute of Psychological Research. Sir is an author and a novelist as well. I have tried to cover all the questions which I got through Q&A session which has been conducted on Instagram, and we have talked about ACC entry, we have talked about NCC. Along with that, there are certain times when interviewing officer try to trick you with comparison questions and they try to put you in such a situation. So we have a very fun session, and if you still have any doubts, you can contact sir from the details which are given in description box and the comment section below. I hope you get to learn something new from this video. So without any further delay, let's get back to the video. So thank you so much for joining me for this session, and this is one of those sessions जो candidates सबसे ज़्यादा wait करते हैं, because सर candidates का तो point of view मिलता रहता है, but somebody who has already served 20 years in Indian Armed Forces, and so you have been an interviewing officer and you have assisted over 2,500 candidates and in various boards, and you're still helping them. So probably I am having so many expectations out of this interview, because I'm going to be a representative of the candidates who have given me doubts. So sir, thank you so much for joining me. Thank you so much for giving me this opportunity, rather. And it is not 20, it is 25 years. Oh, and all right, sir. and I have had a lot of experiences that not only include commanding of ships, and also being part of air squadrons, and being part of administration, and finally being part of the selection process. Yes, So sir. I was in DIPR, I was trained, then I was in Air Force Selection Board where I was trained for the practical phase, and then I have been interviewing candidates for Coast Guard. After that, I have been helping people, mentoring them, not only about SSB, also about how to do well in life, otherwise how to feel good about themselves. All those things has been my domain. Thank you so much. I'm really excited to be part of this. When about this session, I put in Q&A on Instagram, and when they got to know that you are joining, so they have given me a very interesting question. And Okay. as I said, I'm going to be a representative of those Thank candidates. you so much. Yeah. So, sir, I've generally observed that, COVID has played a vital role. And this is what I personally observed. Now, the candidates who are going for SSP, they are being suffering from very minute shift in mindset. It could be a social adaptability factor. It could be a, sir, tolerance power.
and mobile activity kind of things. So, sir, there are a lot of candidates who are facing such kind of difficulty, and you might be dealing with some of them. And sir, how somebody can, cope up with such thing, and what is the right approach for such things? What I'm able to perceive from this question is that because of COVID, they have not been part of the college, basically. There are Yes. many students who are not part of schools, but they Hmm. were part of college. So they, in a way, have, waned out those issues. But there were certain students who just couldn't be part of college. So the part of learning or growing became, slightly, we may say, slightly less oriented. In fact, I Hmm. had a student Hmm. who had such severe issues related to COVID that he actually had to meet a psychiatrist because his social adaptability functions, you Yes. know, went really down. Now, what can we do about it? We can take it in that manner. If we are few, or not say few, we are at least the lucky ones who Hmm. survived it. Yes. And let's make the best out of it. Yes. Now that COVID is over, the scare is over. There are many ways, COVID can work out spontaneously very positive for you. For example, suppose for some reasons in your graduation you were not able to attain very good marks, which has Hmm. happened in many of the students because the classes went online Hmm. and teaching went all of a sudden the module of teaching, like many people have done engineering on online. So they were doing their, like I went for the TED talk in Jalpaiguri. So Hmm. there I was talking to the students. So I said I saw the lathe machine, I saw the carpentry. I Hmm. said, where did you do this while it was online? So they said, Hmm. sir, we did it online. So Hmm. means practically they didn't do it. Now Hmm. this explanation is available to them. Hmm. Why did they get, not very good marks? They Hmm. can always say, "Ki, sir, my entire studies went into the period when I was locked in a room. Hmm. So it had an impact on my studies. I did whatever best I could." So it becomes a source of, I may not say a alibi, but yes, this is the reason why they might have got less marks. This is the reason why they could not participate in certain, events. They Right. could not be part of a lot of extracurricular activities. It Hmm. becomes a reason for them to explain. Right, sir. So we can make the best out of it. And this is my advice, which I give to all the people who come to me for interviews. Ki Hmm. for COVID, you could not go. This is the reason why you could not do. So don't blame Yes. yourself that you could not do. Rather, you take it as this was the reason I could not do. So Right. that rather puts you on the front foot than on the back foot, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. Mm. So, if I talk about personal interview, it is an one-on-one conversation. And sir, I have seen your videos that you have a very cool and calm personality, and you really put candidates on ease. And now they start revealing everything. And I've seen that you're very observant when they speak whatever they are discussing with you. So, sir, a lot of candidates face a lot of difficulty in giving answers. They generally give raw answers. So, how somebody can manage that? And the most asked question is that how to introspect and analyze ourselves in order to present in SSP. So, sir, this is the most and highlighted question which I've got from the candidates. That is what exactly, Sheetal, problem kya hai ki that is the format given by DIPR. It's not that I am trying to be calm or something. This Okay. is how this interview should be. This Okay. interview is supposed to be in that manner so that the candidate per se is encouraged to speak. Yes, sir. It is like, 10-90 ratio. 10% of the speaking is by interviewer, 90% is by the interviewee. And one of the major responsibility of the interviewer is encourage the person to speak. Okay. If you terrorize him, Hmm. if you, kind of shout at him, if you make him uneasy, which Hmm. you might have seen in certain videos, Yes, he sir. cannot speak. He will be in his conscious mind, he will be scared. So Hmm. his free flow of communication will not come. Right, sir. The idea of this interview is that candidate should speak freely, Hmm. and then only his psychoanalysis can take place. Yes, sir. Now, the question that you asked is ki certain answers are raw. I am saying raw is good. Okay, sir. Do not manipulate. Hmm. If you try to manipulate and try to give a fabricated answer, then it is not you. And this will what will work backwards for you. So raw is what exactly is the requirement. If you really want to prepare for this interview, what you Hmm. should be rather doing is Hmm. work on your inner thought process. In what manner? Clean it. Clean it in what sense? Don't have any kind of grudges. Don't Hmm. have any kind of ill feelings. Do Hmm. not feel bad about yourself. Love yourself. Feel that yes, I can do. Believe in the system.
believe in God, build up those qualities, and let go all those ill feelings, let go all those, negative vibes, all those, what you make grudges or issues or, some kind of setbacks that you might have faced in your own life. Right. Do not keep blaming yourself for that. That is Mhm. what is going to work for you. And that is the best way, Mhm. All right, right? sir. Yes, sir. Yeah. सर काफी सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और Yes. कुछ तो मुझे कैंडिडेट्स ने दिए, जैसे सर इफ यू वांट टू जॉइन आर्मी एंड विल नॉट गिव यू सैलरी विल यू स्टिल जॉइन. So this is one of the question, and there are a couple of other also. They start asking comparison, maybe between your parents and maybe between your parents and the girlfriend. They ask. So there are a lot of different kind of comparison which they generally ask. And so these are very tricky questions, and whatever way you choose, it is going to create a very, it is going to be a trap for them, which they generally consider, sir. And also, the other factors also, sir, ki if you really want to join armed forces, why not as a Jawan, why as an officer? So, sir, there is a very different perspective that candidate perceive this question in a very strange way. But, sir, आपका point of view क्या है कि because you have being an interviewing officer, so, Yeah, yeah. sir, in questions का perspective क्या होता है and how somebody can respond then? एक तो आपने जो मुझे शुरू में बोला कि बहुत सारे वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, तो sir. उनको एक्चुअली हाइपोथेटिकल नहीं कहना चाहिए, उनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक क्वेश्चंस। तो Okay. या हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं। तो उनका एक्चुअली पर्पस इंटरव्यू टेक्निक में बहुत ही कम है, Right. और वो in the end it is recommended to be utilized if the candidate has stopped speaking. Okay. These type of questions actually come into being only when the candidate has kind of blocked himself. Okay, This sir. part he has to understand that Mm-hmm. he is here to speak. Now, what Mm-hmm. happens is, because of poor coaching, primarily, Yes, sir. and because of the wrong guidance, he Mm-hmm. tends to give a fabricated answer, as I was telling you earlier. Yes, sir. This fabrication of answers actually blocks his mind. So, interview is blocked. Interview is not actually happening the way it should be happening. Yes, Now, sir. interviewer is also fed up. So Mm-hmm. now, then he is left with one of the last resorts is to put a synthetic question. And this synthetic question is ideally not actually not to be used. This is the word used by DIPR. It not Mm-hmm. use that kind of technique. It should be left to the last resort. Mm-hmm. Now, coming to the specific questions like you asked, why shouldn't you join as Jawan. officer? Why not as a Jawan? Because this person should be able to give this confidence. Mm-hmm. Now suppose the candidate himself says कि सर मैं नेवी के एसएसआर में भी गया था, वहां Mm-hmm. मेरा नहीं हुआ, सर मैं पहले जीडी में भर्ती हो रहा था। अगर वो खुद ही अपने परसेप्शन को ऐसा दिखा रहा है और अपने कैपेबिलिटीज को ऐसे लेके चल रहा है, then these questions will emerge. Right, So sir. you should be able to say with conviction, sir, I believe I am capable of being an officer. And I also believe that being an officer, I'll be able to serve my motherland in a far superior manner. And that's why I have come here to become an officer. Yes, वो sir. कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो फेथ उसको दिखाना पड़ेगा वहां। Yes, तो sir. ये सब सवाल जो हैं, जो हाइपोथेटिकल हैं, जो Mm. बेसिकली सीआईक्यू के बाहर हैं और जो Yes. रीजनरेट हो रहे हैं आपके रिस्पॉन्सेज से, तो आपको एक्चुअली अपने रिस्पॉन्सेज पे ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आपने ट्रिगर किया है, आपने ब्लॉक किया है इंटरव्यू को। Mm. इंटरव्यूअर सिंथेटिक क्वेश्चन पे तभी जाएंगे जब Mm. आप उनको ब्लॉक करके छोड़ देंगे, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। Mm. आप जैसे कि मैं बोलूंगा कि यू आर फ्रॉम विच प्लेस, आप रिप्लाई देंगे आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। अब Mhm. ये कोई जवाब नहीं, Yes, sir. और जनरली ये सवाल भी नहीं होगा। तो सवाल कैसा होगा, प्लीज टेल मी द प्लेस दैट यू कम फ्रॉम, इन केस ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन बियॉन्ड सीआईक्यू, सीआईक्यू का हिस्सा नहीं है। So Yes, sir. how will he ask this question? He will always frame in an open-ended manner. So Mhm. what he will say is, please tell me something about the place that you come from. Yes, sir. So now he's open-ended. Mhm. And you reply in the response, sir, I come from Muradabad. You are blocking it here. Right. He's asking, please tell me something about the place that you come to. He should say, I've come from Muradabad. It is a very famous city. So a lot of works are happening in the brass there. And so the culture is very good. What is he trying to do? He's trying to open you up. He's trying to open you up on a very simple question. But Mm. you are not open. So then he will be, to an extent, forced to ask such That's right. questions, which, kind of puts you into a I can say in that manner, on a back foot, or allows you to go to your thought process, think what will you do. That's why. Yes, That's why he said it's difficult to answer. So right, he'll sir. put the difficulty. बिल्कुल, He's sir. forced. Yeah. Sir, a very popular question which is about your areas of improvement or weakness. And sir, I have generally observed that a lot of candidates face difficulty because now they are directly targeting the area which is
which is going to create an impression on the interviewing officer. So, जब weakness पूछा जाता है तो किस तरह से respond करना चाहिए? Because strength में तो हम directly अपने ही plus points बता रहे हैं, but weakness is an area where I think we need to be in much more alert phase Yeah, and we should be consciously answering such question. yeah. Ideally speaking, शीतल कॉन्शियसली तो आंसर करने की कोशिश कीजिए ही मत। जितना आप कॉन्शियस होंगे ना, आप उतना ही घबराएंगे। घबराने Okay, की sir. जरूरत नहीं है। आप Mm-hmm. देखिए कि सवाल का एसेंस क्या है। Okay, What sir. are your strengths and weaknesses? Mm. Basically, the interviewer wants to know your insight. Yes, sir. There is a term used in selection boards, it's called insight. Psychological term है। आप अपने बारे में जानते कितना है। Yes. और एक तरह से एसडी में भी यही लिखा जाता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट डज पीपल थिंक ऑफ यू। बेसिकली इट इज अबाउट टू गो टू this question कि how much do you know yourself? Do Mm-hmm. you know what is your strength and do you know what is your weakness? Once you know that this is my strength, then probably you can work on it also. Right. Majority of the cases में people just don't know what is their strength, and it is not a surprising fact. People just don't know. Okay. People, I told you, no, first thing which I told you is to love yourself. People don't love yourself this much that they अपने अंदर वो अच्छाई ढूंढ ही नहीं पाते हैं। Okay. Yes, sir. उनको लगता है वो सबसे वर्ल्ड के सबसे नकारे इंसान वही हैं, तो उनको तो आईआईटी में होना चाहिए था, तो फलाना आईआईटी में चला गया, तो फलाना ऑलरेडी एकेडमी में है, तो फलाना ही। वो अपने आप को बहुत सेल्फ ब्लेम, और एक तरह से पेरेंट्स का भी इसमें रोल है, वो भी एहसास दिलाते हैं। वो नहीं उनको बार बार बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू Mm-hmm. नहीं गया तो क्या हुआ, तो अगली बार चला जाएगा, यू आर अमेजिंग गाइस। तो वो सपोर्ट सिस्टम भी मिसिंग है और वो सेल्फ वाला लव भी मिसिंग है। तो Yes. ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी कमियां, अपनी खूबियां भी नहीं जानते। Mm-hmm. तो आइडिया क्या है इंटरव्यूअर का, अगेन टू टेक यू टू योर thought process and ask you what is exactly that is so good about you, and what is exactly that you can work upon. Now what exactly can you work upon? You should be exactly, if you ask me, I can giving a small hint on the tip is what exactly you can work upon is one that is workable. Right, sir. Right, if you say ki, sir, I have the habit of kleptomania, I feel like stealing things, Mm-hmm. it's not workable. Right, sir. Or if you say, ki, sir, I sometimes get a desire to kill people and I want to see how people die, can it be worked upon? No, it can't be worked upon. Yes, What sir. can be worked upon, sir? I'm very less organized. I'm Mm. not able to manage my time the way I should. It is workable. Right. And I am not as efficient in my knowledge section as I should be. Right, sir. I need to work upon my, knowledge. Mm. So I believe my communication has not opened up the way it should have been. I Yes. want to work upon that. Mm-hmm. Sometimes, sir, I feel shy in Yes. communicating, particularly when I'm at public platform. That is workable. So Mm. there are many dimensions of personality, which Mm-hmm. is Yes, sir. sometimes you can also say, sir, I have not been playing a lot of sports because I'm not getting time. I want to open up play. Right. Workable. Mm-hmm. But there are certain dimensions which are not workable. Sir, I want to, feel comfortable with people around me now. This will become a difficult question because now he's not comfortable with the people around him. So he has some issues related to, social adaptability. He has some issues related to, or sir, I want to respect my father. Oh, again, a serious issue. Yes, sir. This person has a lot of issues with his family and Mm-hmm. he's not able to, respect his father. So there is something. Now we'll keep probing, keep probing till the time he gets to the truth of it. Maybe does he actually hate his father, or there is something very, superficial issue which he's not able to explain in words. Yes, I sir. hope you got my point. Right, sir. Yeah. So, since you were mentioning a lot of stories, I would really like to ask my next question around it. So, any interesting or any funny incident that happened throughout your journey, and now also you're dealing with a lot of candidates, any interesting candidate you encountered, and that has given a really good impression on you, or you really cherish those memories with that candidate? Actually, lots of candidates which has given a lot of such insights about themselves. But Mm-hmm. one such incident which I can tell you is कि एक बच्चा था, है Mm-hmm. मतलब something Mm-hmm. था, तो उसका लास्ट इंटरव्यू था। तो Okay. अब ये हमारे साथ ऐसा हुआ था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में, वेयर Mm-hmm. आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग। तो लड़का जब आया तो उससे पूछा, जो ये जो कॉन्फ्रेंस आई होती है, उन्होंने पूछा कि कुछ कहना चाहोगे, अपने बारे में बताना चाहोगे। तो कहा कि सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप सब लोग को देख के, इतने Mm-hmm. सारे ब्लू यूनिफॉर्म और एक वाइट यूनिफॉर्म, दैट वाज मी। तो Okay. मुझे सर, आप लोग अगर एक मौका देंगे तो मैं आप लोगों की तरह रह सकता हूँ, आप लोगों की तरह बन सकता हूँ। सर एक मौका देख के मुझे आप देखिए। He was from village background Yes. and everyone started laughing, and
ही वाज ऑलरेडी अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, Okay. मींस बिफोर डिस्कशन वो रिकमेंड हो चुका था एंड फाइनली ही गॉट रिकमेंडेड, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, Yes, sir. ऐसे बहुत सारे होते हैं। Hmm. बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हैं ना, कई Hmm. बार क्या होता है शीतल की मेंटली गिव अप कर जाते हैं। अभी एक जैसे स्टूडेंट रिकमेंड हुआ पोस्ट कार्ड में, Hmm. ही इज ओनली 27, ही इज अ Okay. मैरिड कैंडिडेट, Hmm. बट ही डिडंट गिव अप, and he's 27, and why he was able to give, because he belonged to the category, and postcard allows category ka ease relaxation, but finally making it in 27 in 22nd attempt, that requires a lot of stamina Right, sir. and lot of mental stamina। जैसे कि स्टूडेंट है मेरा, आप खुद सोचिए कि 22-23 बार एसएसबी के लिए जाना अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रेंथ की बात है। तो Bill. इसीलिए मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप अपने आप को रिपीटर कह के कम आंकना बंद कर दीजिए। Right. आप अपने आप को हमेशा कहिए कि मैं लगा हुआ हूँ और Yes. मैं लगा रहूंगा, और तब Hmm. तक लगा रहूंगा जब तक मुझे भगवान अनुमति देते हैं मेरे एज के हिसाब से, और Hmm. मैं बनूंगा। तो आप अपने आप को रिपीटर कह के ये मत सोचिए कि मैं बहुत बेकार हूँ, आप बेकार नहीं है, Hmm. जस्ट दैट यू आर नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ द वे यू शुड हैव बीन, एंड Yes. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू व्हेन द टाइम विल कम। Hmm. जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट एंड यू विल आल्सो बी रिकमेंडेड। Yes, sir. ठीक है, Sir, I think that guy, 20 years, 27 years old guy, is very lucky to have a mentor like you because, sir, थैंक यू सो मच, यस ही सेज दैट, थैंक यू सो मच, because यस। sir, somewhere the other, जैसे जैसे एज बढ़ती है और अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं तो इंसान बहुत हाँ, कॉन्शियस हो जाता है और वहां पे कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए सर जो उसे सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और ही इज बिलीविंग इन हिम, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल सर। या दैट्स ट्रू। इनफैक्ट मैं बताऊं शीतल, तो एज का बहुत बड़ा रोल है फ्रैंकली, अगर आप यस सर। देखें तो, जस्ट टॉपिक निकला है तो बताता हूँ। यस तो सर। एज का मेन रोल जो है साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ट्रेनेबिलिटी का है। तो जहाँ की एक 18 साल का बच्चा जो एनडीए के लिए जा रहा है वो बहुत ज्यादा ट्रेनेबल है। एक रीजन तो ये भी है कि एज है, दूसरा ये कि उसकी ट्रेनिंग भी लंबी है, बिल्कुल। जरूर 3 साल में वो ट्रेनेबल ज्यादा है। यस सर। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी हम्म। ट्रेनेबिलिटी कम क्यों होती जाती है, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी एक तरह से हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, अब उसमें रिफाइनमेंट और उसमें चेंजेस आने कम है। परंतु मेजर जो फैक्टर क्या रहता है कि हम्म। पर्सनालिटी खराब नहीं है, हम्म। ऐसा नहीं है कि ये बंदा खराब है, हम्म। पॉलिशिंग की जरूरत है। यू यस। जस्ट नीड टू शाइन इट। वो उभर के नहीं आ रहा है, वो शाइन चली गई है। एक अच्छे मेंटोर का यही रोल है कि उस शाइन को, उस डस्ट को निकाले, और अगर पर्सनैलिटी में दम होगा तो वो फिर चमकने, बिल्कुल सर। है राइट ना। सर। सर बहुत सारे जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं वो रिटन एंट्री के थ्रू भी एसएसपी में जाते हैं एंड सर देर आर कैंडिडेट्स व्हेन दे आर गोइंग फॉर रिटन एंट्री दे वुड बी कैंडिडेट हु हैव नॉट डन एनसीसी बट हु वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस अदर थिंग्स। सो सर कहीं ना कहीं एक बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि क्या एनसीसी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है अगर हम रिटन एंट्री के थ्रू जाते हैं। एनसीसी डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉइंट तो देगा ही ना, बिल्कुल। क्योंकि एनसीसी एक तरह से एक बहुत मेजर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। राइट सर। परंतु आप इसको ऐसे मत देखिए कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट देगा ही देगा। अब हम इसको बैलेंस आउट भी तो करेंगे ना। आपने राइट। एनसीसी अच्छा किया बट आपने एकेडमिक्स की ऐसी तैसी कर रखी, राइट सर। तो कैसे बैलेंस आउट हुआ ये। तो हम्म। आपने अगर एनसीसी एडिशनली किया है व्हाइल मैनेजिंग योर एकेडमिक्स, देन तो यस इट गिव्स। हम्म। आपने एनसीसी ही खाली किया है, हम्म। देन थिंक इट विल। सिमिलरली आपने स्पोर्ट्स बहुत अच्छा किया है हम्म। बट आपने बैलेंस आउट नहीं किया है। तो यस। बैलेंस्ड एक तरह से है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्तित्व की एक ही फील्ड में आप बहुत सुंदर निकले, बाकी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट। आपको एकेडमिक्स भी मैनेज करनी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैनेज करनी है, स्पोर्ट्स भी मैनेज करना है। मान बिल्कुल। लीजिए एकेडमिकली बहुत अच्छे रहे, 95% रहे, और हम्म। आप एक सबर्ब में रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती थी, या बिल्कुल। है ही नहीं अपॉर्चुनिटीज। जैसे हम्म। मैं बिहार से हूँ, अब मैं जानता हूँ बिहार के स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा एक्स्ट्रा करिकुलर करने का। जो भी राइट। उसको स्कूल में मिला मिला, कॉलेज में हम्म। मिला ही नहीं हम्म। मिला तो उसने नहीं किया। बट जो मिला था, यानी कि जो एकेडमिक्स था, उसमें तो उसने अच्छा किया, उसने सारे एग्जाम निकाले। तो बंदे को जब मौका मिलेगा तो करेगा, यही बंदा ट्रेनिंग में जब जाएगा, जब तो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग भी करेगा, बहुत हम्म। अच्छा डिबेट भी करेगा, बहुत अच्छा लीड भी करेगा लोगों को। तो राइट वो सर। सब होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कहाँ से है, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज थी नहीं थी, हम्म। कैसे यूज किया नहीं किया, क्यों हम्म। नहीं किया, नहीं किया तो देन इट हैज टू बी बैलेंस्ड आउट। तभी हमने कोविड वाली बात की थी ना, कि जो यस सर। बच्चे मिस आउट कर गए वही तो चीजें मिस आउट कर गए, एंड दे हैव अ रीजन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, दे शुड राइट। बी टू पुट इट इन दैट पर्सपेक्टिव।
राइट सर। है कि नहीं? आपने अभी एक चीज मेंशन करी स्पोर्ट्स के एसोसिएट में, तो सर पीआईक्यू के अंदर एक कॉलम होता है स्पोर्ट्स का, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी जनरली स्पोर्ट्स को बड़ा टारगेट करते हैं कि आपने किस तरह की एक्टिविटीज करी है। सो सर देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट वेरी मच एक्टिव इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और दे डोंट हैव वेरी हाई अचीवमेंट्स in any particular sport or anything like that. So, sir, does it impact their persona when they go for SSB, or if that thing could be manageable? इट इज मैनेजेबल बिकॉज स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं कि मुझे नेशनली खेलना है, And yes, sir. और ऐसा भी नहीं कि स्टेट खेलना है। केंद्रीय Mhm. विद्यालय वाले लड़के मैं जनरली देखता हूँ, क्लस्टर खेलेंगे, रीजनल खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, कभी भी नेशनल भी खेलेंगे। कई Mhm. बच्चे जो जैसे मेरे जैसे हैं, हम लोग Mhm. जैसे गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में पढ़ता था मैं, आर के पुरम में, हमारे Mhm. यहाँ स्पोर्ट्स वही था। एक स्पोर्ट्स का पीरियड, पूरे हफ्ते के एक पीरियड में, पूरे हफ्ते के शेड्यूल में एक 40 मिनट का पीरियड होता था। वही स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ी देर हम लोग बाहर ग्राउंड में चले जाते थे। हाँ जी। वही स्पोर्ट्स देता था स्कूल। जब स्कूल दे ही नहीं रहा है तो कैसे बच्चा पार्टिसिपेट करेगा? बट वही मेरे बगल में डीपीएस आकेपुरम था, वहां हम्म। पे प्रॉपर टीम होती थी फुटबॉल की। हम लोग देखते थे कि फुटबॉल किट पहन के बच्चा इधर से उधर गार्डन में जा रहा है। स्कूल बिल्कुल। इज फैसिलिटेटिंग, हियर हम्म। स्कूल इज नॉट फैसिलिटेटिंग। तो हम्म। डिपेंड्स क्या आपको कहाँ से फैसिलिटेशन था कि नहीं था। हम्म। अगर नहीं था तो आपने क्या किया? आपने गली में खेला, आपने हम्म। दोस्तों के साथ खेला, राइट। आपने स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। आप खेलने कूदने वाले इंसान है कि नहीं? या बिल्कुल। आप खेलने कूदने वाले इंसान ही नहीं? हम्म। आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप घर से निकलते ही नहीं है। कई लोग बुक बॉम्ब टाइप होते हैं, हम्म। स्कूल गए, वापस आए, घर से बाहर नहीं। यहाँ की समस्या है। तो बिल्कुल। समस्या ये नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स खेला है, किस लेवल पे खेला है, वो नहीं है। हम्म। आप have you ever ventured outside with हम्म। people of your own age group, and have you explored the sports? It can be राइट सर। mostly it is cricket, then it हम्म। can be football. If you have done that much, and if you are able to put across in the PIQ, that's हम्म। why there is a column others. राइट Others सर। का मतलब यही है सर, विलेज लेवल और यू नो मोहल्ला लेवल, और मतलब वट एवर फैसिलिटीज आई गॉट आई रिमेन। यस सर। ठीक है नहीं? तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये हम्म। स्पोर्ट्स में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। राइट तो सर। इट विल बी हॉलिस्टिकली सी। बिल्कुल। राइट। सर एक चीज, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, दिस इज आई एम जस्ट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट क्वेश्चन। सर क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि शुड वी शो आवरसेल्फ as it is as we are, or we have to be very practical in approach? Sir, I'll give an example in this question. जैसे सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्लान बी के बारे में बताइए। अब सर देर आर कैंडिडेट्स हु आर वेरी फर्म कि आर्म फोर्सेस ही करना है, दे आर नॉट हैविंग प्लान बी, बट being practical, having a practical approach, they generally say, we are planning for other competitive exams as well, and NEET, maybe some other names of the exam. So how, matlab, what should be the approach? That is particularly I want to emphasize on. आपको अगर अप्रोच जाना है ना, फॉर्मेट ही देख लीजिए एग्जामिनेशन का। क्या सीडीएस बहुत हाई फाई एकेडमिक एग्जाम है? नहीं है। हम्म। आप सीडीएस का एग्जाम पैटर्न देखिए, हम्म। आप इसको कंपेयर कीजिए किसी भी इसके पैरेलल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से। यस सर। क्या ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है? नहीं। नहीं सर। इसका मतलब पैटर्न ही ऐसे बनाया गया है कि आप एक अंध, क्या बोलते हैं, वन साइडेड लवर की तरह मेरे पीछे मत आइए। हम्म। आप अगर सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से सीजीएल कर सकते हैं। हम्म। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। हम्म। आप अगर सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, सीरीज एफकेट सीजी कैट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हम्म। आप उसके साथ बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। बिल्कुल सर। वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। राइट सर। मान लीजिए आप जो है सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार रिटर्न निकाल रहे हैं, आप बार बार सीरीज के एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, एवरी टाइम इट इज हैपनिंग, इट इज टेकिंग अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ। राइट सर। In addition, if you're also preparing for CTN or any other equivalent competitive exams, what is happening is you're also building an alternate career path. It राइट। is helping you mentally, it is boosting your confidence. So it is not about being practical, it is about understanding the concept. कि वो राइट। पागल वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। कह ही रही है फौज, कह रही मुझसे मत करो। नहीं तो फौज जो है सीडीएस का एग्जाम इतना टफ बना देती कि आप अगर किसी और की तैयारी करें तो आपसे रिटर्न निकले ही ना। आप खुद बिल्कुल। बोलिए एफकेट का रिटर्न लेवल कितना कम रखा गया है। यस। सीजी कैट का सेम एजेंसी सीरैक कर रही है, एकदम कम रखा गया है। बहुत सारी एंट्रीज उन्होंने फ्री कर दी है, बोले हम रिटर्न लेंगे ही नहीं। यस सर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज वो समझ रहे हैं कि हम्म। तो टेस्ट एसेस भी है। और एग्जाम पैटर्न देखिए आप, सीडीएस एफकेट सीजी कैट और जितने भी रिटन एग्जामिनेशन हैं, आईनेट पहले होता था, दे आर केप्ट इन कॉन्सोनेंस विद अदर पैरेलल गवर्नमेंट राइट एग्जामिनेशन सर। सो दैट इन केस यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट यू कैन एटलीस्ट बिल्ड अ करियर। बिकॉज इट इज पर्सनालिटी का डायमेंशन कभी कभी बदल सकता
बिल्कुल सर। डायनेमिक असेसमेंट है, तो आप रिटर्न कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म में अफसर बन गए। आपने एसएसबी कर ली तब भी इसका मतलब नहीं है मेडिकल पढ़ा है, मेडिकल के बाद भी मेरिट पढ़ा है। कई लड़कियां जैसे कि आपने भी फेस किया है, यस पांच सर। पांच छह छह बार रिकमेंड होकर मेरिट में नहीं आई, तो क्या दे शुड लीव देयर लाइफ? नहीं। हम्म। So यस they सर। should have a parallel career option. And always, I always advise students, please work on your plan B equally good as plan A, राइट because सर। it will help you mentally very active. यस सर। नहीं तो क्या होगा, आप स्क्रीन आउट होंगे और आपको लगेगा दुनिया खत्म। दुनिया खत्म नहीं होती है, दुनिया हम्म। चलती रहेगी, आप हम्म। भी चलते रहिए। बिल्कुल सर। सर, करेक्ट। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ रिपीटर्स? बिकॉज सर, अगर कोई कैंडिडेट बार बार जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जितने भी पैनल मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस यू आर हैविंग फ्रॉम अ रिपीटर, पर्टिकुलरली इफ आई आस्क अबाउट? शीतल, मैं आपको अगर सच बोलूँ ना, तो रिपीटर शब्द को ही हटा दीजिए। ठीक है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम्म। आज की डेट में कौन है फ्रेशर? इतना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे। यस सर। जब हमारे टाइम में जाने थे हम लोग एसएसबी देने, तब हम मान सकते थे फ्रेशर और रिपीटर में डिफरेंस है, बिकॉज फ्रेशर एक्चुअली फ्रेश है, बिल्कुल उसको सर। नहीं पता है कुछ, वो यस उठ सर। के आ गया है गांव से। हम्म। आज की डेट में कोई रिपीटर नहीं है, कोई फ्रेशर नहीं है, वो ये तो आप इतना सच कह रहे हैं। कंटेंट अपने दिमाग में भर के रखता है। ये तो हम्म। पहला एस्पेक्ट हुआ, तो यस सर। रिपीटर मत करिए। आप ये कहिए कि आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सो मेनी टाइम्स, आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, और रादर आई एम मोर क्लोजर टू गेट हम्म। रिकमेंडेड। लेट्स हम्म। मेक इट इन अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क। राइट। सेकंड थिंग, the question that you asked, the board doesn't take or distinguish anyone. आप कई cases ऐसे देखेंगे, people recommended candidate from one board is not recommended by another board. राइट सर, आई हैव So सीन if इट। that was the case, this recommended candidate should have been automatically recommended in the other board, but the board doesn't consider that. So राइट। even if you're recommended and you write it and you tell it in the interview or in the GTO, जब भी आपसे conversation करते हैं या आपके PIQ में तो लिखा ही हुआ है, तो पता है कि आप recommended हैं, still the assessors are not under any kind of a pressure to recommend you, and they may not recommend you. It has happened to many of my own students. Even a recommended candidate sometimes will get screened out in the next board. राइट सर। सो So मेनी system एग्जाम्पल्स। जो है independent है, it doesn't care you're a repeater, you're a fresher. For you, every time you go, even within a week, like कई बच्चे ऐसे हैं जो नेवी की एंट्री के लिए भोपाल में जाते हैं, एक हफ्ते बाद उसी भोपाल में उनका आर्मी का होता है। So ओके। even if you're coming after a week, it doesn't matter. You are as new as anyone else. So अपने जहन से प्लीज निकाल दें, और हर नई अपॉर्चुनिटी को नए अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट करें, और मान के चलें कि आई विल डू माई बेस्ट इन ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट। Right, sir. I really got a lot of new perspective, sir, while having a conversation because generally, sir, जितने भी candidates का point of view बहुत अलग रहता है and you are being a mentor and you're still helping them. So कहीं ना कहीं आप candidate से भी associated हैं और आपका खुद का भी personal experience है, sir. या So, सर, अभी एसीसी एंट्री को भी मैं थोड़ा सा सर टारगेट करना चाहूंगी बिकॉज बहुत सारे एसीसी एंट्री के लिए प्रिपरेशन करते हैं एंड सर दे डोंट नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ somebody can really improve themselves if they are going for ACC entry because they are soldiers and now they are going for an officer entry. So, और sir, इवन right, sir. और एफ एयरमैन, कई Yes, मेरे स्टूडेंट भी हैं, कई बन भी गए हैं, कई बनने वाले हैं। yes, इनफैक्ट sir. मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहा है, ही इज Very बट ही wow. इज गोइंग, आई एम श्योर ही विल मेक इट, अभी चल रहा है उसका SSB। Yes, sir. देखिए, इसी में क्या अंतर आ रहा है, Mm-hmm. सर्विस रेंट में अंतर क्या आ रहा है, कि Yes. आप ऑलरेडी एक सोल्जर हैं, Mm-hmm. एयरमैन है, नेवी के, यू आर अ नेवल पर्सन। इसीलिए सीआईक्यू में एक बदलाव, सर्विस एंट्री पर Mm-hmm. उसे ही जाना जाता है, कोशिश की जाती है, सबसे पहले यही जाना जाता है कि Mm-hmm. आपको सर्विस में क्या मिला, आपने Right. सर्विस के लिए क्या किया, आपको Mm-hmm. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके अचीवमेंट्स क्या है। Mm-hmm. वहां पे शुरुआत होती है इसी सीएनटी बिल्कुल। वाले, और वो ये जानने की चेष्टा है कि हाउ मच डज ही एक्चुअली लव द फोर्सेस, और Right. इज ही वेरी अनहैप्पी, ओ नो मैं तो जवान बन गया, मुझे तो अफसर Mm-hmm. बनना था। Right. ये पर्सपेक्टिव तो नहीं है। तो Mm-hmm. जनरली जवानों को ये सोचना चाहिए, जब वो जवान बने हैं, अच्छी बात है, वो अफसर बनना चाह रहे हैं और बनेंगे भी, परंतु ये नहीं करना है कि ये बोलना है कि सर मैं तो बन गया था, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या बन गया मैं, परंतु मैं बनना नहीं चाहता था। अरे यहाँ सर। दिक्कत एक हो सकती है, बिल्कुल। इसका ख्याल रखने की जरूरत है। Mm-hmm. और ये ऐसा नहीं कि बोलना है, ऐसा उनको Mm-hmm. सोचना भी चाहिए कि अगर वो आर्मी की नौकरी कर रहे हैं तो बहुत शान से करें, और वो शान और वो गर्व और
बिलोंगिंगनेस सर्विस के लिए, और वो खुशी दिखे उनके चेहरे पे, ये बहुत बिल्कुल। जरूरी। हम्म। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि एक और जो दूसरी प्रॉब्लम एसएससी एंट्री कैडेट्स के साथ मैंने देखी है, वो ये है, यस। यार सर्विस प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन नहीं खुला होता है। हम्म। अब ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ऐसा रहा, जनरली विलेज से होते हैं, तो वहां हम्म। कम्युनिकेशन का ना विलेज में मौका मिला, अब यहाँ पे भी फौज में भी ओपन अप नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन। यस सर। तो उनको अगर तैयारी करनी है, मेरे अगर हम्म। ओपन करें अपने आप को, हम्म। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, दिस शुड नॉट बी द इम्पेडिमेंट। राइट। ये आपके रास्ते में एक अवरोध की तरह खड़ा ना हो जाए। और आज की डेट में शीतल, इतने सारे एवेन्यूज हैं, इतने सारे हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, इतने राइट। सारे ऐप्स आ गए हैं। हम्म। मैं तो अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मेरे जमाने में तो कुछ नहीं था, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में पढ़ता था। यस तो सर। मैंने तो इंग्लिश बोलना दूरदर्शन न्यूज से सीखा। अरे ओके सर। वो भी आधे घंटे का मिलता था, सीरियसली। हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां तो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, गणित, समाज शास्त्र, बिल्कुल। विज्ञान, हम्म। हम लोग हिंदी में करते थे। हम्म। सारा हम लोग हिंदी में करते थे। मेरा तो इंग्लिश मीडियम ही शुरू हुआ 11th में, क्योंकि यस वो सर। बुक्स ही अवेलेबल नहीं थी दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में बुक्स इंग्लिश में शुरू होती ही थी 11th से, और वो भी साइंस की। मेरे कई हम्म। दोस्त जो आसपास पढ़ते थे, वो पूरा हिंदी में पढ़ते चले। तो मेरा यस। रोल मॉडल एक सुब्रमण्यम साहब थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, एल शिवरामन, जो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हु यूज्ड टू बी द न्यूज एंकर एट डीडी, एंड देयर वाज ओनली वन चैनल। I राइट। learned it from him. I know students who have learned from BBC. I हम्म। know students who have learned it on their own. Communication cannot be the impediment. It should not be. English is now our own language. I tell it to everyone. यस सर। If English is the reason why you're not becoming a defense officer, you cannot forgive yourself. राइट सर। English is not German. English is not Russian. It's not French. It is हम्म। your own language. You start your life with English, actually. The राइट। hospital where you're born, everything must have been in English, हम्म। including the nameplate of the doctor, हम्म। or the syringe which was going in the mother's body, or the injection, the packet, everything. Do you see Hindi anywhere? नो सर। You don't वेरी see रेयर। it. All English around you, and still you're studying the English. राइट। Then you are blamed, and it can be overcome. Trust me, Sheetal. If you हम्म। are able to dedicate 3 months, हम्म। you can speak freely. It can be done. राइट। यस सर। Again, belief and faith वाली बात। बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है। तो दो ही चीजें, इंग्लिश और हम्म। सर्विस की प्रति वो गर्व, वो सम्मान, वो अनुभूति, वो अंदर से वो, है ना, बिल्कुल सर। जोश, ये हम्म। जरूर देखो। ये बिल्कुल। सवाल इंटरव्यूअर ये पूछता है, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो आप हम्म। नॉर्मल कैंडिडेट तो ये भी बोलेगा, सर सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एमबी की तैयारी। इसको हम्म। क्या बोलना, इसको बोलना चाहिए, सर आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, वेरी राइट। प्राउड, एंड आई कीप ट्राइंग, एंड आई कीप डूइंग, आई एम हैप्पी विद। तो दिखना चाहिए, बोलने से खाली नहीं होगा, वो बिल्कुल आपके सर। चेहरे पे भी दिख जाता है कि आप अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से, बिल्कुल सर। राइट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। अंदर से। बिल्कुल। पॉजिटिव माइंडसेट एक हम लोग फोर्स करते हैं, ओके। मीन्स वी ट्राई टू कन्वे, try to हम्म। look positive. No, राइट। you हम्म। can't appear to look positive. You have to feel positive. इंटरव्यूअर बहुत बारीकी से आपको पढ़ लेगा कि you're trying to look positive or if you're actually positive. राइट तो सर। आप एक्चुअली पॉजिटिव हैं, तो वो आपसे ज्यादा सवाल करेगा ही नहीं। राइट और सर। अगर आप लुक पॉजिटिव हैं, तो बाद में आप खुद ही बोल देंगे, सर माफ कर दो, मैं झूठ बोल रहा था। आप इस लेवल पे भी आ सकते हैं, इन राइट सर। केस यू ट्राइंग टू फेक इट, दैट इज व्हाट बिल्कुल आई मीन। सर। या So we have come to an end, and there would be a lot of candidates who would be seeking guidance and or might be about to go to SSB. So any tip you want to give to them since they are about to go and they're seeking some guidance from people. So please. माय 2 3 एडवाइसेस देयर। Okay. चूज योर मेंटर वॉइस, ठीक है? That is डू so true, नॉट sir. कॉम्प्लिकेट योर लाइफ Mm-hmm. अंडर कॉम्प्लिकेटेड पीपल, माय Mm-hmm. फर्स्ट एडवाइस। सेकंड एडवाइस इज हैव बिलीफ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड। Right, sir. You are trying to become something, you're trying to make yourself better. Mm-hmm. Have belief that you will do it. Do not put yourself down. आप Mm-hmm. खुद ही अपना बिलीफ सिस्टम वीक ना करें। आप विश्वास रखें कि आप करेंगे, कर लेंगे। फेथ रखें भगवान पे कि ही विल टेक केयर ऑफ यू, इफ नो वन एल्स। बिलीफ एंड फेथ सिस्टम को स्ट्रांग रखें। चूज योर मेंटर वेरी वाइजली। Do not be just part of the crowd. You Mm-hmm. should find the person who is Mm-hmm. able to help you understand yourself, Right. work on your weaknesses, and Mm-hmm. help you. Third thing which I want to tell you is, do not try to practice too much psychology. Okay. It's not required.
What is required is working upon your own unconscious mind and Mhm. cleaning it from within, rather than, it's important to shine the personality than, feed the personality. तो Right. आप ऐसे बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि ये पिक्चर आएगी तो मैं ये स्टोरी लिख दूं। आप अपने आप को क्लॉग मत कीजिए, ये इस Mhm. सवाल आएगा तो मैं ये जवाब दे दूं, नहीं। Mhm. इससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और आप इमीडिएटली फॉल फ्लैट कर जाएंगे। Mhm. 2 मिनट 5 मिनट की इंटरव्यू में यू आर फॉलिंग फ्लैट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इट। यू हैव टू रादर प्रिपेयर योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, Mhm. बिलीव इन योरसेल्फ, एंड वो पैशन, वो जोश, वो जुनून, उस पे काम कीजिए। बिल्कुल सर। So ठीक thank है, you so much for joining me for this थैंक यू सो session. मच रादर। Because या, I got a very different perspective, and I believe a lot of candidates are going to learn a lot from your perspective and थैंक your यू, experience, and थैंक that यू is सो definitely going to add value to their life. So I'm very, really, very grateful to have you, sir. Same here, Sheetal, and thanks a lot for giving me this platform, this opportunity. Yes, sir. God bless you, and you do well in the field that you're doing. Yes, And sir. thank you so much. Bye bye. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.